Hi guys. So in today's video we will see कि हम ये fingers का use करके कैसे makeup कर सकते हैं. Cool. I have all the products with me. So in this video I'll not be using any kind of foundation or anything. I'll just use a CC cream so that हमारा जो makeup है base वो proper मतलब इतना loaded ना हो और it looks simple and easy to go. Like you can wear it anywhere you want to go, like to your office, with your friends, everything. So yeah, let's just get into it. So starting with the base preparation, मैंने अपने face पे अभी moisturizer लगा लिया है. You can see it's shining, right? So moisturizer is applied. I have also moisturized my lips. So the next step would be applying a CC cream because we are doing a everyday makeup. So CC cream would be a good option to go with. I use this Lakme 9 to 5 CC cream. So this is my favorite and I am using it from past 2 to 3 years. So this is amazing and itna heavy nahi lagta and this cover ups your skin and cover ups all your pores. So I just love this and इसका शेड अभी बीज है और मुझे हनी भी आ जाता है. So मेरी स्किन थोड़ा दोनों के बीच में पड़ती है. So you can buy it with your buy after matching it with your skin color. Now I'm just putting it on my finger because पूरा हम ये फिंगर से ही करने वाले हैं मेकअप. देन ज़्यादा अमाउंट नहीं लेंगे बिकॉज ज़्यादा अमाउंट लेने से थोड़ा केकी हो जाएगा और मतलब थोड़ा फिर वो एकदम फिनिश्ड नहीं लगता. सो वील डू इट लाइट. तो दिस इज़ द अमाउंट विच आई हैव गॉट. ऑलमोस्ट पी साइज अमाउंट है और इसका कलर यू कैन सी. सो इसमें 3 शेड आते हैं. तो यू कैन बाय एज पर योर स्किन टाइप. शेड्स हैं बीज, हनी एंड ब्रॉन्ज. Let's just apply it thoroughly. Since my skin is a bit acne prone and sensitive, so I avoid doing heavy makeup. This is good to go with and कोई इसमें issue नहीं है. Like it also looks polished and fine. So I always try to do it light and better. So now starting with my eyes, since I won't be concealing my eyes because it's everyday makeup, so I'll just put some of the cream here and then spread the dots all across my face. You have to cover the areas thoroughly so that कहीं पे पैची और कहीं पे नॉन अप्लाइड लगे ही ना. तो आपको इसको अच्छे से डैप करना है पूरे फेस पे एंड देन ऑन योर नेक. अभी तो मैंने हाई नेक पहना है सो यहाँ तक आई कैन अप्लाई इट एंड यू कैन ब्लेंड इट स्मूथली विद योर हैंड्स. You can also use a beauty blender, but I am just trying to do it with my fingers. So I won't be using any of the beauty blender. So now let's blend it faster. This might look too much, but after blending it perfectly, it won't look like this. Don't forget to blend at your forehead properly. और अगर आप अच्छे से blend नहीं करते तो it can also lead to creases. Now you can see it is perfectly blended and कुछ ऐसे white cast भी नहीं हो रहा और ना ही ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़्यादा केकी या कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा. So it looks like a normal skin. So once I have applied it, I will set my under eyes. So for that you can use powder or you can use the Fit Me powder. So this is the Fit Me powder which I usually use. This is from Maybelline New York and दिस इज़ मैट पोरलेस पाउडर. मेरी स्किन बेसिकली बहुत ऑयली है सो आई कीप इट हैंडी. इसमें आपके पास एक एप्लीकेटर भी आता है लाइक दिस बट आई विल यूज़ माई फिंगर्स ओनली. सेटिंग योर अंडर आइज इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप बिकॉज अगर आप प्रॉपरली अपनी आइज़ को सेट नहीं करते तो ये क्रीज हो जाएंगी, which will not look good and polished. I also apply a bit over here so that it dries. Okay, cool. So the next step would be, if you want to go with the eyeshadow you can apply it like I'll be applying it in this video, but in case if you're not applying it you can directly go to the step where you will be applying your eyeliner. I have this makeup series from Swiss Beauty, so I bought it at the time when I had to attend a function and then I bought this one.
So it has multiple colors, like all colors are very glittery and vibrant, you can see. एंड इसके साथ एक एप्लीकेटर भी आता है, बट आई विल यूज़ माई फिंगर्स अगैन बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट. इसके अलावा आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस वन, लाइक दिस इज़ फ्रॉम Maybelline, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक यूजिंग दिस वन. आई कैन यूज़ दिस. Since my Hinex color is blue, so I'll try to match the shades with it. And this can also be done with your ethnic outfits. Starting with the golden, I'm feeling like going golden, so I'll just dab it here. Like this, and then on this eye. So you can see it is applying really well, and the shade is very glittery and vibrant, and fingers se apply karna is very easy. You can always use your fingers in this. Now for side linings, I will use this blue color. So I have used my small finger to make a line like this. Same I'll do with this eye, and now I'll blend inwards. While applying your eyeshadow with your fingers, you have to be really careful, क्योंकि आपके fingers इतनी precise नहीं होती जितना एक brush होता है. तो आपको properly सही जगह पर उसको place करके तो ही glide करना है, otherwise ये पूरा आपका face पे फैल सकता है. Now let's have the shade of pink in between. I'm feeling like going all glittery and colorful, so I'm using these vibrant colors like this. And in the inward corners, always use lighter shades so that आपकी eyes white दिखें. So I'm using this one. It has some silverish tint, and after applying, blending it inwards. इनर कॉर्नर पे इतना ज़्यादा नहीं आपको अप्लाई करना है, बिकॉज ये वरना थोड़ा फैला हुआ लगेगा, और क्लीन लुक के लिए थोड़ा सा अप्लाई करना है, सो दैट आपकी आईज जस्ट थोड़ी वाइड लगे बट ओवरडू ना लगे. नाउ यू कैन सी आईज का ऑलमोस्ट डन है. ऊपर जो क्रीजेस आ रही हैं इसको मैं फिक्स कर सकती हूँ विद माई फिंगर्स. तो लेट्स जस्ट टेक अ metallic shade of golden which will mix with my crease line, और इसको ऐसे हम just glide करेंगे with the crease like this. Same I'll go with this one. So application for this is done. और अगर आपको लगता है कि कुछ अगर आपको फैला हुआ फील होता है तो you can always wipe it off. And the next step for this will be mascara. So let's just apply mascara. Use the Hyper Curl Mascara, वॉल्यूमिनस मस्कारा फ्रॉम Maybelline. सो दिस इज़ माई ऑलवेज गो टू. एंड क्योंकि इसमें मुझे बार बार अपने लैशेस कर्ल करने की नीड नहीं पड़ती. सो आई विल जस्ट टेक दिस एंड अप्लाई लिटिल बिट. आई विल डू दिस फॉर माई लोअर लैश टू. यू कैन सी द डिफरेंस. ये वाली आई में थोड़ा वॉल्यूम आ गया है और इसमें अभी नहीं है, बिकॉज इसमें मैंने अप्लाई नहीं किया. साइड वर्ड्स आई विल ऑल्सो अप्लाई इट. So mascara makes a great difference to your eyes. You can see this eye look a bit wider than this one. So now second eye में भी हम इसे फटाफट अप्लाई कर लेते हैं. You can see it's done for both of my eyes. So for a slightest curl, I can do like this to give the effect of that curl. So eyes के लिए अभी तक हमने आई शेडो अप्लाई किया है, and then we have applied this curl mascara. Now I will apply kajal to my waterline. I can use this pencil one, like this is the Lakme's iconic kajal. I can use this one, or I also have this Maybelline's kajal, the waterproof one, so I can also use this. So it also has a brush, but let's just do it with the hands. So I've taken some product on my smallest finger like this,
एंड देन आई अप्लाई इट, जैसे कि पहले लोग लगाया करते थे विदाउट एनी एप्लीकेटर. I'll keep it light just to give that polished finish to my eye. Okay, so थोड़ा थोड़ा काजल will do for me. So you can see definition हमारे पास आ गई है आईज में. Now the next step will be the eyeliner. So it's a daily makeup. So अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, you are going to the party, you can also apply fake lashes. In case अगर आप नहीं करना चाहते हो तो you can directly go with the eyeshadow. So let's just use this one, Lakme Iconic. And there's a trick of applying eyeliner. See, you just need to wipe the extra product here, and then you can see इसकी जो टिप है, this is very like very narrow now. अब आपको क्या करना है कि अपनी आईज है जो उसके साइड से वाटर लाइन से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस. सेम विद दिस आई, सो दैट यू कैन हैव दैट लाइनिंग, प्रॉपर लाइनिंग, ताकि आपको दिक्कत ना हो. अब नाउ इट्स अप टू यू, आप इसको कैसा अप्लाई करना चाहते हो. इफ़ यू नीड इट वाइड, यू कैन अप्लाई इट वाइड ऑल्सो, एंड आप कोई पतली लेयर भी लगा सकते हो. सो इट्स टोटली अप टू योर स्टाइल. सो नाउ लेट्स जस्ट अप्लाई. इन द वर्ड्स, I always try to like make it very narrow to just give the definition. Same I'll do with this eye. Like this, and after it, it's up to me if I want to make this wider or smaller. So let's just go with this. सबसे पहले ट्राई टू मेक द लाइन्स एंड देन ट्राई टू फिल द प्रोडक्ट इन इट. This I have first made an outer line and then I am filling it in. Okay, so now it's done. You can see my eyes are properly defined. Just wiping off the extra product from my eyelashes. Yeah. Okay, so the eyes are done now. Now the next step will be, for me, I always try to do the contour at the end. So right now I have just glammed up my eyes and then मैंने base सिर्फ clear किया है. अब now I'll apply the concealer. So this is the stick which I have. This is from Wet n Wild and this is very handy and very easy to go because इसमें दोनों products इकट्ठे हैं. इसमें first you can see ये आपके पास है इसका contour and then this is the highlighter. So let's just apply the contour first. So you need to do the contouring as per your face. So अभी जैसे कि मेरा forehead थोड़ा white है and then I have a little bit of fat over here. तो इसको हाइड करने के लिए वी कैन यूज़ दिस. तो सबसे पहले it does nothing but it's just change the focus of light on your face. Like अगर कोई लाइट आपके फेस पे ऐसे पड़ रही है तो it will focus more on this area because ये एरिया हमने डार्क कर दिया. So this is basic science. So now let's just draw the pattern over here so that your cheeks look a bit slim. Then you can apply it here and then around the nose. Okay, now the next thing will be the highlighter. So highlighter we apply on those areas जहाँ पर हमें extra light चाहिए अपने face पे glow करने के लिए. तो let's just take this area and this area here, here and done. Okay, so I might look like an alien. अब now हम इसको blend करेंगे properly with using our hands. So now let's just blend this. सबसे पहले I'm blending the highlighter and then I'll go with the contour.
लाइट का फोकस थोड़ा मेरे फेस पे शिफ्ट हुआ है, बिकॉज जहाँ जहाँ पर हाईलाइटर है वहाँ पर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी एंड इट विल, दैट एरिया विल लुक मोर वाइडर एंड मोर ग्लोई. सो नाउ लेट्स blend our contour. So forehead ka contour you always need to blend inwards, so I'm just doing it. Then nose का हम ऐसे inwards को करेंगे. Then with the cheeks just do it like this so that your cheek looks uplifted like this, and this one you can blend inwards. Now let's just blend here downwards, because we want to shift the focus, so we'll just blend it downwards. Okay, cool. So फेस पे मेरे फोकस लाइट का थोड़ा शिफ्ट हुआ है, यू कैन सी लाइक शिफ्ट हुआ है, एंड देन यू कैन सी थोड़ा ग्लैम्ड अप मेरा फेस लग ही रहा है अब. तो बेसिकली इतना हमें करना होता है. अगर आप अपने आईज को यहाँ पर अपने आईब्रोज को थोड़ा डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द आईब्रो पेंसिल. सो आई हैव दिस आईब्रो पेंसिल एंड लेट्स जस्ट ड्रॉ सम पैटर्न. तो आपको बस लाइट हैंड से इसको ऐसे से ग्लाइड करना है, बिकॉज अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड से ग्लाइड करेंगे तो उस पर डिफाइंड लाइन आएंगे विच डज नॉट लुक नॉर्मल एंड मतलब वो नेचुरल नहीं लगता. सो जस्ट गो लाइक दिस, लाइक वी did shading in our schools, so like that. Okay, you can fill in your eyebrows like this, and then let's just comb them. Now my eyebrows and face is done. Now let's just go with the blush. So if you have a blush, like dedicated blush, you can use it, and if you don't have, you can also use a lighter shade of lipstick. For example, I have this 9 to 5 Lakme lipstick. This is weightless matte and the shade is blush velvet, this one. So this is the blush velvet 9 to 5. I can apply it as a blush, so just this is a matte lipstick, so we need to be careful. So just I'll put some dots over here and here. Then let's just blend this upwards. This gives a feeling of a natural kind of blush, and इससे अगर आप ऊपर की तरफ को इसको ऐसे blend करेंगे, then it gives you a lifted face effect like this. Cool. So you can see the blush is also applied and my skin looks even, जबकि हमने ज़्यादा बेस भी यूज़ नहीं किया है, and it is looking fine and good. Now let's just apply the lipstick. So I'm feeling like going with a bit darker shade, so let's use this Lakme 9 to 5 and the shade is Brick Blush. I'm not using any of the lip pencil. I'll just outline my lips with this lipstick only. So you can see the trick. Just press it to your lip line like this to define your lips, and you can remove the excessive amount, and then do the same for lower lip. Now blending it, and you can see it's applied very easily. And this is matte lipstick, so it gives you a fine and very perfect and neat look. If you want the color to be mixed with some kind of pink, you can also try, like let's just mix it with the Maybelline lipstick. This is the 9 to 5 which I used as a blush. So if I want to blend the colors, let's just dab it inwards like this. Just dab it with your fingers.
सो यू कैन सी द लिप्स आर नाउ लुकिंग पफियर बिकॉज मैंने इसमें क्या ट्रिक यूज़ किया है, इसमें मैंने जो डार्कर लिपस्टिक है उसको मैंने आउटवर्ड्स रखा और उसको मैंने लाइक बेस की तरह यूज़ किया एंड देन आई अप्लाइड द लाइटर शेड ऑफ लिपस्टिक ओवर इट सो दैट ये थोड़ा हमें पफी सा इफेक्ट दे. सो इट इज़ लुकिंग लाइक अ बिट पाउटी and now it is done. Excessive lipstick you can always use like a blush, so let's just apply it over here. Yes, now it's done. So this is how you can do your everyday makeup using few products and using your fingers only. So इसमें जो eyeshadow था that was optional, that's up to you only, like how you want to apply it, and the rest of the things it's up to you, like how you want it as per your personal style and as per your preferences. So thanks for watching the video guys. Have a good day. Bye bye.